No, no, I think first of all, I'd like to thank all of us on stage. I'd like to thank Ajit for backing us with Viacom. I'd like to thank Vipul, without which Force 2 would not have happened. He came to me and he said, listen, let's do this. I'd like to thank Abhinay because being a fan of his, I've got the opportunity to work with him and he was gracious enough to do Force 2. And Tahir, of course, is a revelation which you'll see in the film. So we won't talk about him right now. Once you see him, you'll love him. Sonakshi, of course, I've been a big fan of. And finally, being with her on screen, you realize that she makes such a big difference to a film. The value addition that Sonakshi brings to a film is fantastic. And talking about pressure, I like working out, and I think it's motivation, it's good fun, and I think we're all happy to be fit. Absolutely, and that's a great message you give across. Since we're talking about messages today, you know, I think you've been a brand ambassador for doing the right things for a very long time. You know, and I think ये आज जो एक मैसेज भी जा रहा है इस फिल्म के साथ, और आज जिसके लिए हम आए हैं, जिस गाने को हम रिलीज भी करने वाले हैं, तो उसके बारे में, you know, I know you like to be involved in all stages of filmmaking also. I know you would have been involved in this also. तो इसके बारे में अगर कुछ शब्द हो जाएंगे, हर कोई एक जवाब चाह रहा है from an Indian, and an Indian who is in a position to be able to give a voice of influence, and you are in that position. So we would love to hear your thoughts. First of all, I'd like to give Abhinay the credit for that Force 2 anthem, क्योंकि एक साल पहले अभिनय ने सोचा इसके बारे में. He had said that I want to have a Force anthem in the film, और he and Vipul kept deliberating on क्या होना चाहिए anthem. और ये फिल्म जब भी हमने शुरू करी थी उस टाइम पे, I don't think there were any issues at that point of time. तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये ना तो ये गाना ना तो ये फिल्म opportunistic है, क्योंकि फिल्म एक दो दिन में नहीं बन सकती, एक साल लगती है फिल्म बनाने में. So we've gone through the process, and fortunately for us, this film reflects the angst in society today. तो आप देखिए, I think the less said and the more seen is better. So you all must watch this, and we'd love to watch it with the press and actually get your views on it, because the ideas that we thought about it so long ago, and if it makes sense today, then we'd be very happy. By Kumar, and it's sung by Dev, a young singer, and of course the voiceover is done by John. Our music partner on this film is T-Series. Mr. Bhushan Kumar has some other appointments, he couldn't make it, but we are representing T-Series on his behalf today. So that's the creative team behind this particular song, apart from the team here. Start. Are we looking for a mic, or is it a quiet audience today? Otherwise, I'll start. Okay. Yeah. Hi. First of all, congratulations to the Starcast. A brilliant song. John, Sonakshi, आपसे जानना चाहूँगा इस पूरे song का idea किसका था, and what is the whole idea about it? I think Abhinay is the right person to answer that question. Abhinay, if you can just take that, because काफी discussions हुए इस गाने के बारे में. I think Abhinay will take you through the process. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था एक्चुअली कि ये हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी जब एक एंथम सॉन्ग करने का आइडिया आया था कि इस फिल्म के लिए फोर्स एंथम ये बहुत ज़रूरी था, जो कि ये इस फिल्म का एक सार 3 मिनट में बता सके, या फोर्स इस शब्द के कुछ और मीनिंग्स लोगों के सामने रख सकें. तो ये एक बेसिक आइडिया था तभी, और ये हमने सबने डिस्कस किया और सबको बहुत अच्छा लगा ये आइडिया. और उसके बाद हमने मतलब हम फिल्म शूट करते रहे, एंड इवेंचुअली एक समय आ गया जब हमने गौरव से ये बात करी, एंड बिटवीन गौरव कुमार एंड द टीम ये एक मिलकर एक 2-3 दिनों में ये पूरा गाना लिखा गया. तो इसका एक ही मकसद एक था कि हम फोर्स इस गाने के थ्रू हम जितने कम समय में हो सके, लेकिन एक अपलॉज दे सकें, एक स्टैंडिंग ओवेशन दे सकें अनसंग हीरोज़ के लिए, जो हमारे लिए हु टेक केयर ऑफ अस
and our security every day. So that was our intent right from the beginning. And somewhere down the line, it coincided with what the situation today in our country is. So this is how the यहाँ से शुरू हुआ था. ओके जॉन, मेरा सवाल आपसे है. आप गाने का हिस्सा हैं, वॉइस ओवर भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब हम वीडियो देखते हैं जिस तरह से आपके एक्सप्रेशन है चेहरे पे, लाल लाल, और जब आप गा रहे हैं तो बहुत दिल से गा रहे हैं. उसके लिए क्या तैयारी करी जॉन आपने? जी, कितना मुश्किल रहा? नहीं, मैं क्रेडिट कुमार को देना चाहता हूँ, द जेंटलमैन हु रोट द लिरिक्स, क्योंकि जब भी मैं गा रहा था, अभिनय को पता है कि एवरी टाइम there were points in the song where I nearly had tears in my eyes, क्योंकि एकदम गुस्से में गा रहा था मैं, एकदम passion के साथ, and I think it comes naturally, and honestly, if you're an Indian, it will come naturally. वो तो आएगा ही आएगा, and it just showed in every shot, and it was beautiful. It was beautiful. जो process था मेरे लिए was absolutely fantastic. हालांकि सिर्फ एक voice over था, but I think it was fantastic, just extraordinary. अभिनय जी, आपसे सवाल है. विपुल जी आपके प्रोड्यूसर तो रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, और उन्होंने आँखें जैसी फिल्म भी बनाई है, ब्रिलियंट फिल्म बनाई है. तो आप दोनों के बीच में कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस होता था जब? एक्चुअली उल्टा था. क्रिएटिव डिफरेंसेस तो छोड़िए, हमारे बीच में एक्चुअली इतनी अच्छी दोस्ती है, और हम एक दूसरे को मतलब देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस. तो ही हैज़ बीन एक्चुअली मोर ऑफ अ क्रिएटिव पार्टनर, क्योंकि कुछ क्या होता है ना कि जब एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी होता है, और जब आपका प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर है, तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प होती है आपको, क्योंकि वो समझ सकता है एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों एक चीज़ करना चाहते हैं. तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एसेट था मेरे लिए. क्रिएटिव डिफरेंसेस तो बहुत ही दूर की बात है. ओके सोनाक्षी, मेरा सवाल आपसे है. अकीरा के बाद दूसरी फिल्म फोर्स टू, और यहाँ पे भी आप बेहतरीन एक्शन करती नजर आ रही हैं. कैसा एक्सपीरियंस रहा? खास करके जो गाना हमने आज देखा उसके बारे में जानना चाहूँगा. और बैक टू बैक एक्शन फिल्में कर रही हैं आप, कोई खास वजह फिल्में इस तरह से मिल रही हैं, या आप खुद प्रेफर कर रही हैं एक्शन करने के लिए? नहीं, एक्चुअली ये कोइंसिडेंस था कि दोनों एक्शन फिल्में बैक टू बैक आई मेरे पास. बट जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे दोनों रोल्स बहुत पसंद आए, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है. स्टाइल ऑफ एक्शन भी दोनों फिल्मों में बहुत अलग है. सो हाँ, एंड मुझे एक्शन फिल्में देखना बहुत पसंद है, उनका हिस्सा बनना पसंद है. सो और रोल वाज फैंटास्टिक, तो उन सब रीजंस के लिए मैं इस फिल्म का हिस्सा बनी. और अदर देन दैट, अच्छा लगता है जब आपकी फिल्म में एक लार्जर देन लाइफ अप्रोच हो, ऐसा संदेशा देने के लिए कि आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं. और जब मैंने ये गाना सुना, सच्ची मेरे एक्चुअली हर बार जब मैं सुनती हूँ, आज भी मैंने सुना और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी वेरी पेट्रियाटिक, इट्स वेरी इमोशनल, इट्स वेरी टचिंग. एंड आज के दिन आई थिंक हर इंडियन को इससे कनेक्ट करने का मौका मिलेगा कहीं ना कहीं. सो आई फील आई एम really happy that we have a song like this in our film, or I hope that it inspires a lot of Indians today. ओके जॉन, अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं, और फोर्स टू एक फ्रेंचाइजी, एक बेहतरीन कमाल हिट फिल्म की, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, और आपने कैसे मैच किया? जॉन अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं, सोनाक्षी जी, आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे इनके साथ में एक्शन करने का मौका मिल रहा था. इनफैक्ट बहुत कोई फिल्म में नहीं होता एक एक्शन सीन था जहाँ पर मैं साइड पर थी, और शूट के दिन इन्होंने अकीरा का ट्रेलर देखा, और उन्होंने एक्शन डायरेक्टर से कहा कि इसको भी डालो सीन में एंड मेक हर डू द एक्शन. सो थैंक यू फॉर दैट जॉन. कभी नहीं होता कि शूट के दिन सीन बदला जाता है एक एक्टर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसमें. तो फॉर दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, एंड आई फील वेरी वेरी लकी, एंड एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए. सो आई डिडंट रियली, आई वाजंट स्कैर्ड, आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड. ओके फोर्स टू है, क्योंकि पहली वाली फिल्म बहुत कामयाब रही है सोनाक्षी. ताहिर और जॉन पहले ही फिल्म का हिस्सा रहे हैं, आप नई एंट्री है फिल्म के अंदर. प्लीज. ताहिर भी नया है. यस यस यस, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. अभिनय सर भी नए हैं. यस, वेरी ट्रू. लेकिन फोर्स 2 से पहले फोर्स 1 जरूर देखिएगा. ओके, अब दोनों से जानना चाहूंगा, फिर ताहिर से भी जानना चाहूंगा, और अभिनय से भी जानना चाहूंगा, और सोनाक्षी से भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जॉन पहले से फोर्स 1 का हिस्सा है,
एक कामयाब फिल्म रही है, आप तीनों पे कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं? वेल ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक कामयाब फिल्म है, क्योंकि ये फर्स्ट एक बहुत अच्छी फिल्म थी, उससे हमारी इंटरेस्ट फिल्म में और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वी वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट फ्रेंचाइज एंड वंडरफुल एक्शन फिल्म। तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे अप्रोच किया गया इस फिल्म का हिस्सा बनने, ये रोल प्ले करने के लिए। ताहिर, आपको कैसा लगा? सबसे पहले फोर्स वन करने में मुझे बहुत मजा आया। नहीं, मोर सीरियसली ये इस फ्रेंचाइज की मेरी पहली पिक्चर है। एंड लाइक सोनाक्षी सेड, यूजुअली एक्टर्स को इस बात की टेंशन होती है कि यार पिक्चर चलेगी कि नहीं, लोग देखने आएंगे कि नहीं। इट्स सो रिलीविंग और बहुत गर्व होता है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट पर आए हैं जिसकी ऑलरेडी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो सवाल तो उठता ही नहीं है कि लोग देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब ट्रेलर ऑनलाइन गया तो जिस तरह का रिएक्शन हमें मिला वो ज़्यादातर फोर्स वन के है और जॉन के फैंस थे जिन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे काम को। तो एक तरह से प्रेशर है, बट ऑन द अदर हैंड इट्स आल्सो वेरी रिलीविंग टू नो कि यू आर पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइज दैट ऑलरेडी हैज एन ऑडियंस बेस। Oh, sorry. Yeah, yeah. I think it was Abhinay and Vipul both spoke to me about it, and they said there's a voiceover and you should lend your voice to it. And I just thought it was very apt because it's me talking about it, saying Desh badal gaya, sab kuch badal gaya. And it feels so right for ACP Yashvardhan, the character, to speak. He's a police officer. He's a righteous police officer. और वो मिशन पे जाता है, एंड देन यू नो ही इज़ वेरी क्लियर, एंड देयर इज अ, इफ आई मे से दैट लाइन इन द फिल्म, क्योंकि एक लाइन है फिल्म के अंदर जहाँ मेरे सीनियर जो है मुझे बोलते हैं कि इट्स नॉट अ प्रोटोकॉल टू गो इन टू अदर कंट्रीज, एंड आई से सर सब कुछ बदल गया, अभी अंदर घुस के मारते हैं, यू नो। सो दैट्स हिज कैरेक्टर, ही डजंट केयर। और वो बोलता है भी, ट्रेलर में आपने सुना होगा, 5 साल पहले उसकी बीवी मर गई, उसके बाद वो सटक गया है। So he has nothing, he's on a death mission. He wants to just take everybody out. So I think it was just right for me to lend my voice to that. I haven't lent my voice. Well, honestly, I was lucky that I prepared well enough for Akira that those skills came in handy over here as well. In terms of the kind of action, I think there's some really cool, very sleek, stylized, high-octane action sequences that you're probably seeing for the first time in Hindi films, and I feel it's been shot really, really well. We work with some great action directors from across the world, and they've come up with such great sequences. I'm sure each one of you will really enjoy them. There's some amazing car chases, there's like gunfights, there's hand-to-hand combat. It's really, really cool. So I really enjoyed doing all of that. जी, मेरा I can speak for myself. I'm very happy with the kind of action that I've done in my these two films that I've done back to back, and yeah, I'm quite happy because honestly, there was no different treatment from the action directors. They were directing a person trying to make them do action, so it really didn't feel any different. And yeah, I'm sure it can definitely. There's always scope for improvement in everything, so hopefully it'll get better and better and better. Yeah. Yeah, I think where Force 2 is concerned, I give, like I always say this, it's a director's prerogative, and he actually gave the female actor the opportunity to do this kind of action because the role demanded so. If you're asking me whether there's enough action for women in films, the answer is no, completely no, because we usually like dancing all the time, most of the time. So for a change, when you see a woman doing action, at least someone like me, I get really impressed because when I told Sonakshi there was a shot where there's actually a blast, right, Abhinay? There's a blast that happens behind us,
and I had to hold her and we had to jump. And I said, and I was worried, क्योंकि वो second day पे था. And I said, how will I tell Sonakshi Sinha to jump now? What if she calls her dad or something? You know? So I said, Sonakshi, you don't mind, you know, thoda, we'll have to jump till then. She said, yeah, I'll jump, I'll jump. And then I looked at her, and then finally she jumped. And after that, I realized this girl will do anything. She doesn't say no. She did all the action sequences herself. She was absolutely fantastic. She was comfortable. And when you see someone like that, you realize that, you know, there should be more action for women, and she's done a fantastic job. Yeah. अजी अरे हम लोग Because we are working together. we have to- Correct. Bigger cause. Next part. Force 3. Next one. ओके विपुल जी मेरा सवाल अजीत जी here ये तो एक कमर्शियल फिल्म है, लेकिन वाईकॉम 18 ने बहुत डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट चूज किए हैं इन 3 सालों में. क्या कभी जैसे रहस्य और जो दूसरी फिल्म्स हैं उनको लेते हुए आपको कभी घबराहट हुई है कि कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि हर फिल्म के ऊपर जब आप एक निर्णय लेते हैं कि आप इस दिशा में जाएंगे, इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाएंगे, तो घबराहट, नर्वसनेस, चिंता, वो सारी भावनाएं बिल्कुल होती हैं, हर बार होती हैं. और जिस तरह से हम लोग का सिनेमा बदल रहा है और इवॉल्व हो रहा है, यू नो, तो यू हैव टू कीप सॉर्ट ऑफ अ स्टेप अहेड. तो पहले अगर आप देखें साल में 10-12 फिल्मों में 1 या 2 या 3 कंटेंट फिल्में आती थी. अब हिंदी इंडस्ट्री मेन स्ट्रीम कंटेंट फिल्में बना रही हैं. तो आई थिंक इट्स समथिंग दैट यू हैव टू बी एट इट कॉन्स्टेंटली. And that's where this film becomes very important, because if somebody were to ask, you know, is this your kind of film, maybe a year ago I would have said no, my kind of film is Madras Cafe, you know. But here we are doing a mainstream action, you know, franchise. But what is important is that it's not just action and sequences. I think at the heart of the film is a great story. And you will always find Viacom 18 wherever there is a story, you know. So it's the chase, it's the chessboard that happens between, you know, Tahir's character and John's character, and Sonakshi is the partner on that hunt. And how that unfolds, even without the action, that whole brain game is, I think, very interesting, and which excites us as someone who look for storytelling. So we are excited about this, yes. ओके विपुल जी मेरा सवाल आपसे है. विपुल जी, इफ यू कैन हियर मी सर. सुनने में ये भी आ रहा है यू पीपल आर प्लानिंग टू गो दिल्ली एट अमर जवान ज्योति, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर. जिस स्पिरिट में हमने एक फिल्म बनाई है और जिस स्पिरिट में ये गाना बना है, और जैसे कि हमने सबने पहले भी कहा कि जब हमने ये फिल्म शुरू की थी तो हमें नहीं पता था कि माहौल कुछ ऐसा होगा. पर जैसे जैसे इस फिल्म का अब जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो जो रिस्पांस हमें आ रहा है, पहली बार एक फिल्म है जो अनसंग हीरोज़ की बात कर रही है. सारे ही जवान, सारे ही फोर्सेस हमारे देश के हीरो हैं, रहेंगे, लेकिन जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, स्पाइज हैं हमारे, वो अपना काम बिल्कुल गुमनामी में रह के करते हैं. और जैसे हमने इस फिल्म के बारे में रिसर्च किया और हमें पता चला, तो हमें लगा कि हमें इस फिल्म के ज़रिए एक ट्रिब्यूट उनको देना है. वी वांट टू पे द ट्रिब्यूट टू द अनसंग हीरोज़. और ट्रेलर से लेके इस गाने से लेके यही सोच आगे बढ़ रही है. हम अमर जवान ज्योति पे जाना चाहते हैं और हमारा ट्रिब्यूट उनको देना चाहते हैं. और हम चाहते हैं कि जो अनसंग हीरोज़ हैं इस देश के, ये फिल्म उन लोगों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करे. सो हमारा पूरा एफर्ट रहेगा कि हम उस कॉज को आगे सिंसियरली बढ़ाएं. थैंक यू. Okay, my question is to On the left, yeah. I think enough has been spoken about it. You just expect us to join the bandwagon and give you one more comment. I think the song says it all. We're very clear in this song. We've said it. That's why we're sitting here before you. This reflects the way we feel. I always say this. I said, my country comes first. That's all I can say. My country is most important to me. You know,
like they say, you're not a Hindu, you're not a Muslim, you're not a Christian, you're an Indian. So my country comes first. All right, guys, thank you so much. I think that was fantastic. But normally what we do is, we wrap up things, but I think the significance of this song would be lost if we just had a little question answer. So even for you all, now, yes, you have a question? Okay, this is the last question. Then there's more, so we'll continue. Yeah, but go ahead. मी मैं तो हर क्लॉज पढ़ता हूँ सब कुछ 5.1 5.2 1.1 1.2 सब कुछ मैं पढ़ता हूँ किसी को आई माइक्रो मैनेज एवरीथिंग पूरी जो लाइफ है मेरी आई माइक्रो मैनेज तो सब कुछ पढ़ता हूँ As a celebrity, sorry, I didn't get that. Ji. You're asking me whether we should sign agreements or? Endorsing, whether they should endorse brands. Whether they should, so you're saying should celebrities endorse brands because that influences people to buy those brands? Pierce Brosnan. Okay, yeah. Well, basically it's that. Yeah, I think marketing people, क्योंकि मैं media planner था, मैं advertising agency में था. Abhinay also is part of the advertising industry. He also understands that. I think you get more eyeballs with, even Ajit is part of that. You get more eyeballs when you sign on a cricketer or a film actor. But I also think it's an actor's responsibility to sign on a brand that he believes in and that the message he passes out. I think that's very important. So अगर John Abraham fitness में मानता है या motorcycles में मानता है या he likes certain things, he will sign on brands that reflect his personality. He doesn't just want to be a model, he has to be a role model. वो बहुत ज़रूरी है. And that's a decision that you must take. There is no gun pointed at your head. And actors can do it for two reasons. आप दो reasons के वजह से आप ये कर सकते हो. Either you want to build your equity or you want to make money. The choice is yours. For me, money is not important. And I say this on record, money is not important. Choosing the right brand is important. Money is a byproduct. आप समझ रहे हो ना मेरी बात? I spoke like a marketing person, no?